बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे आपके साथ हम ये डिस्कस करेंगे लीगल मैटर्स रिगार्डिंग लिटिगेशन रिप्रेजेंटेशन एंड इमिग्रेशन और जैसे आप जानते हैं हमारे साथ हमारी टीम होगी जो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देगी और हेल्प करेंगे इस मैटर में तो लोगों के हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए थे लास्ट वीक उनके ये इश्यूज़ थे तो वो हमसे रब्ता करना चाहते हैं दैन अगेन आप ऑफ एयर हमारी डिटेल्स ले सकते हैं थ्रू आर कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल एड्रेस टेलीफोन नंबर्स और स्टूडियो से आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे एज यूजुअल में हमारी टीम होगी हमारे साथ होंगे शाहिद मंसूर साहब welcome back he's an immigration consultant Raj Chopra Saab solicitor advocate criminal law and again nice to see you and welcome to the program and हमारे एक नए चेहरे आए हैं new faces within our team is Iqbal Rana Saab who's an immigration consultant welcome to the program thank you तो इंशाल्लाह अगेन व्यूज़ से ये होगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप उसे मुत्तसर रखें और टू द पॉइंट रखें कोशिश ये करेंगे तो हम आपको अच्छी एडवाइस दें और आपके कोई भी लीगल मैटर्स और लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेशन विल बी मोर देन हैप्पी तो पहले तो हम ये शुरू करते हैं राज साहब से लिटिल बिट राज साहब लास्ट टाइम we were discussing some of these issues regarding you know with the police and yes. we talked about driving offences ये big issue आजकल you know with the driving ये traffic lights offences आते हैं speeding का होता है number of people you know उसमें बेचारे फंस जाते हैं उनके लाइसेंस अफेक्ट होते हैं तो थोड़ा सा आप ये मुझे बताएं let's go for the speeding one. Okay. The reason I say that because mashallah sir, you have a very good record of helping people in terms of going to court, magistrates court, yeah, of course. जहाँ पे issues होते हैं हम अपने व्यूज़र को ये बताना चाहते हैं अगर उनके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हो then they can contact the right solicitors so we're happy to help them. Yeah. तो आप ये थोड़ा से बताएंगे that with the speeding जो होता है you know in the issues regarding that तो वो summary आएगी उनके पास from the police इधर से आप बात शुरू करें. If anybody has been caught speeding either by a mobile van or by a fixed camera, the police will send 172 notice under the Road Traffic Act 1988 to ascertain who the driver was. And you have a duty to provide those details within 28 days. If you do not, then you commit a separate offence for failing to provide information. Usually normal practice is that the police will send one set of 172 notice. If you don't respond, they will send you another one. Again, you have 28 days to provide the details, and if you don't, and then if you don't, then what will happen? You'll be sent summons to attend court. Why did not you provide the details? So that speeding offence is gone. Now it's a new offence, failing to provide the details of the driver. And then again, if a person who has genuinely not received the summons. notice or the summons, first the notice, and then on a balance of probability 50-50, the person will attend, will do a statutory declaration, reopen the case and then list it for a trial and thereafter this is a fact-finding a thing, and if the person who has been the victim of these circumstances, then if he can provide the evidence why he did not receive, what was the what problem he had in the past with the post, etc. And if they believe him, then they. So इधर तो आपकी बात आ गई ना. Then obviously you're gonna be the person who's gonna help and to guide the client, in these circumstances. That this evidence किस तरह उनको gather करना है. Right. First of all, let me start from the beginning. Somebody has been sent 172 notice, and that person disputes that I was not the driver, whatever. He can ask, and police got a discretion to provide photographic evidence. Right. And if the photographic evidence is there, and then there's a band between 30 and 45 speed limit, the police can offer a driving awareness course, which is on last about 1.5 hours, and then they will not prosecute that person. Raj साहब आपसे पूछना था. For example, अगर जैसे एक घर में 2-3 drivers हों, how are they going to ascertain who's the driver at any given time? Yeah, so we've had cases like the reason I'm asking you because व्यूज़र को बता रहे हैं because हमारे साथ बहुत सारे ये होते हैं families में एक कार होती है उस पे different drivers होते हैं जिस पे allow करते हैं through insurance
and we have the expertise. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایشو ہے تو پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا, اسکرین پہ آئے گا, ای میل ایڈریس بھی آئے گا, تو ان شاء اللہ we'll try to help you and guide you. راج آپ تھوڑا سا اسے بتائیں گے اگین فار دا ویورز کو سمجھانے کے تو اس سچویشن میں کس طرح آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, how we can provide that service. Well, first of all, if the family members, there are quite a few of them in the family, we don't know who was driving that day. Obviously, all the effort they have made to find out who was driving, what they were doing on that particular time at the day. If nobody is coming forward, matter will be listed in court for a trial, and everybody will give evidence under oath, say I can't remember where I was, or I was there but I did not drive the car, or somebody else was in the family who was driving the car. And if the magistrates believe them or him, and then the case will be dismissed, he will be found not guilty. So very good, Raj. آپ کے پاس ابھی آئیں گے دوبارہ, اپنے ویوزن سے یہ کہیں گے, آپ کا ہمارا ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا اسکرین پہ, ای میل ایڈریس آ رہا ہے, آپ آف ایئر بھی لے سکتے ہیں ڈیٹیلز, آپ یہاں کنٹرول روم سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سچویشن آپ فیل کرتے ہیں جہاں پہ لیگل میٹر ہو, litigation or representation, anything to do with immigration, then you contact somebody who's a good solicitor and will be able to help you. We're here to help you. ایک کال آ رہی ہے, اسے ہم شامل کرتے ہیں. کون کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بردر ذرا آپ اپنی اونچی آواز کریں گے so we can hear you. ہیلو. ہلو, جی جی, ویلکم ٹو دا پروگرام. سر جی مجھے سوال پوچھنا تھا. جی بولیں. جی یہ آن ہے, آپ اپنا کوشچن کریں. مجھے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نا وزٹ ویزے پہ آیا تھا 2011 میں انگلینڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور پھر میں نے شادی کر لی اپنے ویزے کے درمیان ہی. اچھا, پھر میں نے اپلائی کیا تو ہوم آفس نے مجھے ریفیوز کر دیا. پھر میں نے اپیل کی تو اپیل میری منظور ہو گئی اور کورٹ نے میرے اپنا فیصلہ دے دیا. اس کے اپیل منظور ہونے کے 1 سال بعد ہوم آفس نے مجھے پھر دیا ہے 2.5 سال کے نا وہ دیے ہیں, مجھے اسپاؤس ویزا نہیں دیا, وہ دوسرا ویزا دیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں 10 سال بعد میں انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں. تو اس میں تھوڑی سی بتائیں گے, کیونکہ اور لوگ نے شادی کرتے ہیں تو انہیں تو جلدی انڈیفینٹ مل جاتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 10 سال بعد آپ کو دیں گے, یعنی کہ 2.5 سال کے 4 ویزے دیں گے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی مجھے آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز, اپنا نام بتاتے جائیں. آپ کا نام؟ جی آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز. میرا نام شباہت حسین. شہباز, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فی کال. ہمارے پاس آپ کا کویشچن آگے, کی واچنگ پروگرام, انشاءاللہ آپ کو اسی پروگرام میں جواب دیں گے. ٹھیک ہے جناب, ایک اور کال آ رہی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پروگرام. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام, کون کہاں سے؟ My name is Nazir Ahmad. جی جی. My daughter-in-law Yeah. been refused visa Mhm. because of the English language requirement, Yeah. and she applied on dyslexia reason, and they have still refused it. Can you tell me anything about it, please? So when did you, daughter-in-law, you talking about your daughter-in-law? ٹھیک ہے نذیر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں جی. جی آپ نے اپلائی کرا تھا لیگیسی, ڈیڈ یو سے لیگیسی؟ جی ڈسلیکسی, رائٹ, ڈسلیکسی. تھینک یو. آپ کا سوری آئی ڈنٹ کوائٹ کیچ واٹ یو سیڈ. تھینک یو. اوکے ٹھیک ہے, کیپ واچنگ پروگرام, انشاءاللہ آپ کو اس میں پروگرام میں جواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا رانا اقبال صاحب, آپ سے ماشاء اللہ سے so great, you do number of cases on, again آپ کا very good record of dealing with immigration cases, and I think the key things that ہم آپ کو پہلے ویلکم کرتے ہیں ہماری ٹیم کے, and جو ویوز دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو بیٹھے ہیں ہمارے سب کولیگز ہیں, we work as a part of a team, and inshallah we'll try to help and guide the viewers on any matters regarding any issue. تو آپ سے میں پہلے تو پوچھنا تھا, let's just talk about the, یہ جو spouse visa کا, there's still confusion about the 18,600. People, some believe in کم آ گیا, and some people saying it's gone through parliament, it's gone through the courts. We know where it stands. آپ تھوڑا سا اس پہ لائٹ ڈالیں بتانے کی, so that ہم views کو explain کریں. Yes, there are speculations that it's been reduced, but there is nothing in confirmation. So as far as purpose of the case is concerned, it's still 18,600 for husband and for husband or wife.
if you got a child, there is a premium of another £2,800, and if there is another child, it amounts to about 24,000 and roughly about 24,500 with 2 children. But there are speculations that it's going to be reduced. It may reduce to 15,000, some rumors, but the original intention was that it will be reduced about 13,500, but no confirmation yet. राज साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दे, कॉल आ रही है, शामिल करते फिर आएंगे आपके पास. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, वेलकम. कौन कहाँ से? उस्मान बात कर रहा हूँ शायद से जी. तो मेरा मसला ये है कि मैंने शादी की थी 2 साल पहले पाकिस्तान में और स्पाउस वीजा अप्लाई किया था. तो मैं शॉपर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. तो मैंने जब अपना केस फाइल किया तो उसमें मैंने अपनी जो इनकम थी वो 19,000 प्लस शो की थी, जो कि आफ्टर टैक्स थी, जो कि लॉ है. तो उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपने पूरे 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजी. तो मैंने उसके लिए अपील की थी. जब मैं अपील में गया तो वहाँ पे होम ऑफिस का लॉयर आया हुआ था. तो उन्होंने कहा कि जी आपकी 2-3 जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसी है कि जो किसी फ्रेंड ने आपके अकाउंट में डाली है. तो मैंने उन्हें ये बताया था कि जी ये मैंने बोरो किया है, लेकिन मेरी जो ग्रॉस है वो 28,000 प्लस है. और उसके बाद जो मेरी नेट इनकम है वो 19,000 है. तो इसकी वजह से ये हम एक दूसरे के साथ बोरो करते रहते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो वो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने. हालांकि ये जेन्युइन इनकम थी, मेरे पास मेरी कंपनी के लेटर भी थे, ठीक है, जिन पे उन्होंने बताया हुआ था कि जी ये सब यहाँ पे काम करता है और जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. तो अब मैं इसके बारे में क्या करूँ कि हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में इसके लिए अप्लाई करूँ या दोबारा रीअप्लाई करूँ? ठीक है, ओके, थैंक यू उस्मान भाई. कीप वाचिंग प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देंगे आप क्या करें इस सिचुएशन में. जी आपसे मैं अभी बात कर रहा था, एक शायद कॉल आ रही है, शामिल करता हूँ, एक और कॉल आ रही है, ले लेते हैं. हेलो जी, हेलो, कौन? जी मेरी बात से मैं ऑफलाइन बात करना चाहूँ. आप ऑफलाइन बात करना चाहेंगी, नो प्रॉब्लम बहन. आप स्टूडियो से जो है ना, आप अभी नंबर ले लें कंट्रोल रूम से, वो आपका नंबर दे दें और इंशाल्लाह विल हेल्प यू देन. ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया. राना साहब, आप अभी यही बता रहे थे 18,600. चलें अभी इनका केस का जवाब दे दें. उस्मान भाई का जो अभी फ़ोन आया था, जो मेंशन अबाउट हिज इनकम के बारे में. आई मीन what situation he's in, he wants to know whether इनका reapply करना चाहें या उसकी अपील करना चाहें. he's in a situation now. जी, मेरे ख्याल में इनको अपील लगानी चाहिए. अपील में इनको अच्छा चांस मिल सकता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, ट्रांजैक्शन के मुतालिक, अपनी जॉब के जो स्लिप्स वगैरह, जो बैकअप डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने के लिए मेरे ख्याल में इनको अपील लगाना चाहिए. और मेरे ख्याल में इनका अच्छा चांस है. अगर ये अपील करना चाहते हैं तो हम इनकी मदद कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इनका अच्छा चांस है ये केस विन कर सकते हैं. जी जी, स्पेशली इन्होंने कहता है इनकी जो ग्रोस इनकम थी, ऑब्वियसली इन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, and I think that should be taken into account. Of course. Yeah, and so plus savings, the rules do allow savings as well. Yeah, savings, yes, rules do allow, you know, but based on his Mr. Usman's earning itself, I think he stands a good chance in appeal. For appeal. Usman bhai, आपने अभी सुन रहे हैं, इंशाल्लाह you have a good chance for appeal. अभी इकबाल साहब ने आपको बताएं. तो अगर आप चाहते हैं कि इसको इसे रन करने के, प्लीज़ हमारी डिटेल्स ले लें, ऑफ है, हम बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. ठीक है ना, इस आपका केस जो होएगा उसमें फिर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देगी. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें टेलीविज़न पे हम नहीं बात कर सकते बिकॉज उसमें काफ़ी डिटेल्स चाहिए होती हैं. तो इंशाल्लाह डू गिव अस अ कॉल. चलें, मैं अभी क्वेश्चन करने वाले थे, कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो जी, वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. मैंने पहले टेलीफोन किया था लेकिन रिसेप्शन अच्छी नहीं थी. जी जी, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? नज़ीर अहमद. नज़ीर अहमद, जी जी, मैनचेस्टर से. ठीक है नज़ीर साहब जी. आप मुझे प्राइवेट टेलीफोन नंबर दे दें, मैं बात में कर लूँ अगर आप नहीं मिलता तो. जी, आप हमारा नंबर लिख लें, मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूँ 077 077. आप इस तरह करें, आप जो ये हमारा जो कंट्रोल रूम उनसे ले लें, फिर आपको देंगे नंबर. ठीक है, आई वुड लाइक टू हेल्प यू. आप हमारे कंट्रोल रूम से ले लें, वो आपको नंबर दे देंगे. आप हमारे ईमेल पे भी भेज सकते हैं लीगल मैथ्स.
सुन रहे? Hello? I think his call's gone. Yeah. ठीक है. Moving on to Shahid Saab. Shahid, obviously there's आपसे तो अभी बात नहीं हो रही because we've been discussing a number of issues. तो बात ये थी this rules changes आ गई हैं, बहुत सारे और changes आ रहे हैं. We're talking about the visitor के जो है refusal and the visitor visa. तो इसमें तो obviously it's going to impact on the families. That's right. ये तो लास्ट ईयर से उन्होंने जो है वो न्यू पॉलिसी जो चेंज हुई थी उसकी बेसिस पे उन्होंने जो है राइट ऑफ अपील जो है वो हटा दिया था, और जो अब लीगल सिचुएशन है आप अप्लाई करते हैं विज़िटर वीज़ा की, अगर आपको मिल जाता है फर्स्ट इंस्टेंस पे वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता देयर आर ऑब्जेक्शंस और रिफ्यूज़ल है तो आपको फिर फ्रेश एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी एज लॉन्ग एज यू कैन ओवरकम देयर ऑब्जेक्शंस. चलिए कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगे. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. जी 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 बिल्कुल, मैं इधर से बोल रही हूँ, मैनचेस्टर से. जी, आप बहन अपना नाम बताएंगी? जी, मेरा नाम रज़िया बेगम है. जी बाजी, आप बात करें और क्वेश्चन बताएं. जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी आंटी आई थी 7 years ago. तो वो उनको कोई लेके आया था यहाँ पे, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई. ठीक है. तो लेकिन वो फिर इलीगल हो गई, तो उनका कोई उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है. तो वो बेचारी अब सोच रही है कि मैं कैसे केस पाऊँ या क्या करूँ. अगर वो कुछ करती है या अप्लाई केस करती है, कोई उसको किसमें बेनिफिट मिलता है, वो कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती. ठीक है. तो आप क्या उसके कोई बच्चे भी है, सारे इंडिपेंडेंट है, सब कोई, सबकी शादी हो चुकी है, बेटियां भी उसकी मैरिड है, उसको डायबिटीज भी है, हार्ट की पेशेंट भी है, वो बेचारी बहुत परेशान है. प्लीज मुझे कोई इस बारे में मशवरा दे, तो फिर मैं उसको कहूँगी अगर आपको से मिलना भी होगा तो मैं उसको आपका नंबर भी दे सकती हूँ. जी, आप हमारा नंबर दें, ज़रूर दें. ठीक है. थैंक यू रज़िया बाजी, थैंक यू फॉर योर कॉल. आपका क्वेश्चन आ गया. जिस इनका जैसे को अभी शायद अभी आऊँगा आपके पास, एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? मैं साइमा बात कर रही हूँ लंदन से. जी वेलकम. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी का केस रिफ्यूज हो, पैराग्राफ 276, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मीनिंग है? अगर रिफ्यूजल या जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप ये बता. ठीक है, वो पैराग्राफ तो बताएंगे आप. ये आपकी किसके बारे में आप बात करें कि ये किस तरह आए थे, पहले ये तो बता दें. मैं सो हमें थोड़ा बैकग्राउंड. मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली शादी की थी, शादी की बेस पे अप्लाई किया था, तो उनका रिफ्यूज हो गया था. फिर उन्होंने जो है ना जुडिशियल रिव्यू में गए थे, तो फिर उन्होंने अपील का राइट भी नहीं दिया था. तो वो कहते हैं कि हम पैराग्राफ 276 के तहत हम रिफ्यूज करते हैं. तो फिर उन्होंने दोबारा जो है ना अभी अप्लाई किया, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता कि 276 पैराग्राफ क्या होता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ. ठीक है. तो आपने क्या कहा था, जुडिशियल रिव्यू हुई थी? जी, जुडिशियल रिव्यू हुई थी, ग्रांट हुई थी, लेकिन वो 2-3 दफा उन्होंने एक्सटेंशन मांगी है, तो पता नहीं अब आगे क्या होता है. ठीक है, ओके. इंशाल्लाह आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे. कीप वाचिंग द प्रोग्राम, आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में ही जवाब देंगे. Obviously, शायद got diverse questions come in, Iqbal Saab, Raj Saab. We need to get some of our crime cases as well, inshallah. That's why we're here to provide a service. शायद obviously this has got to be a major impact. ये impact है to the communities. जो families को visitors पे बुलाना चाहती है, तो इस again is targeted in the subcontinent people. That's right. Obviously, there's been a pilot scheme which was rolled out last year, targeting people from Africa, in particular people from Nigeria, Ghana. And in the subcontinent, the countries, the usual suspects, India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka has been targeted for the bond scheme. शायद साहब एक कॉल आ रही है, ब्रेक से पहले एक कॉल शामिल करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मैं मिस सारिश बात कर रही हूँ. क्या नाम था? सॉरी, सारिश. सारिश, थैंक यू, वेलकम टू द प्रोग्राम. मुझे आपसे कुछ पूछना था कि मैं यहाँ पर इस कंट्री में आई हूँ 1 दिसंबर 2012 में, ठीक है, स्पाउस वीजे पर. ठीक है, स्पाउस पे. अब मुझे मालूम करना है कि जो मेरे पासपोर्ट का पेपर्स आए थे उसमें लिखा हुआ है 27th of month के पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए. और मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वीजे पर, पासपोर्ट की वीजे पे लिखा हुआ है आपको अगस्त 2015 पर अप्लाई करना है, ठीक है. तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे कब अप्लाई करना होगा. ठीक है, एक्सटेंशन का आप जो बात कर रही है ना, कि जो मुझे कौन सा पेपर देना होगा. अब
ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے بہن آپ پروگرام واچ کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کا کویشچن ہمارے پاس آ گیا ول آنسر دیٹ کویشچن پروگرام میں شاید obviously سمری آنسرس جو جواب ہم دیں گے پروگرام کی جو بریک ابھی آئے گی اس میں جائیں گے تو اس کے بعد دیں گے انشاءاللہ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بالکل یہی ہے کہ جو ہوم آفس یا گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا کہ جو ویزا اسکیمز ہیں جنرل ویزا اسکیم بی اٹ اسٹوڈنٹ ویزاز یا اور دوسرا جو ہے وزٹر ویزا وہ کافی جو ہے ابیوز ہو رہا تھا تو ان آرڈر ٹو کرٹیل دا ابیوز دے ہیو انٹروڈیوسڈ اے بانڈ اسکیم اس کا بیسکلی میننگ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں وہ ادھر آتا ہے وہ رہتا ہے ہوم آفس ایکسپیکٹس دیٹ پرسن ٹو گو بیک اپون ایکسپائریشن آف دیئر ویزا لیو ٹھیک ہے ان دا پاس یہ ہوتا تھا کہ لوگ وزٹر ویزے پہ آ جاتے تھے اور وہ واپس نہیں جاتے تھے ٹھیک ہے شیخ صاحب سوری آپ کا انٹروگرام بیکاز بریک سے پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں بیکاز وہ ایک اور کال آ گئی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون کہاں سے قاسم بات کر رہا ہوں مینچسٹر سے جی قاسم ویلکم ٹو دا پروگرام سر میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 10 ایئر بیسس پہ انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے ابھی تو ہلو جی جی آپ سوری آپ بات کریں ہم آپ کا کویشچن سن رہے ہیں آپ کویشچن کریں 10 ایئر بیسس پہ میرا کرنا ویزا چاہیں فنش ہو رہا ہے 27 فیب 2014 اس منتھ کی اینڈ میں یا اور میرے 10 ایئرز ہوں گے 30 مارچ کو ٹھیک ہے اٹس اے گیپ آف لائک 32 ڈیز یا تو اب آپ مجھے مطلب کیا مشورہ دیں گے کہ کیونکہ جیسے آپ ان کے لاء میں کہتے ہیں کہ یو کین اپلائی بفور 28 ڈیز ود ان 28 ڈیز تو پھر بھی میرا گیپ آتا ہے 3 to 4 ڈیز کا ٹھیک ہے تو کیا پہلے میں کوئی دوسری اپلیکیشن ڈالوں اور پھر ویری کروں یا ڈائریکٹ ڈال دوں تو اس بارے میں آپ پلیز مجھے مشورہ دیں گے کہ 10 ایئرس میں انڈیفینٹ کیسے اپلائی کروں ٹھیک ہے ون ٹو اپلائی ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا کال کا قاسم بھائی شاید بفور وی گو ٹو بریک آپ اسے تھوڑا سا فنش کر دیں پھر بیسکلی ہم وزٹر ویزے کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور میں آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا ویورس کو کہ جو ریسنٹ چینجز ہوئی ہیں ویزا ریکوائرمنٹ میں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اینڈ ہوم آفس یو کے بی اے کا سٹانس یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ اینڈ افریقہ کی سرٹن کنٹری سے جو ہے دیر از بین ماس movement of people who are coming and obviously the government doesn't have any issue against people coming here but what they were trying to do was to stop the abuse تو ظاہر بات ہے اس میں جو ہے ایک بلینکٹ اسکیم ہے کیچ آل ہے جو لوگ جینوئن وزٹرس تھے اب وہ بھی اس میں آ گئے ہیں جن کی کبھی انٹینشن نہیں بھی تھی کہ وہ یہاں پہ پرماننٹ اسٹے کریں ان کی فیملی ممبرز ہیں کافی عرصے سے ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈ سے وہ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں اور وہ آتے جاتے رہتے تھے انفارچونیٹلی اب وہ بھی اس پائلٹ اسکیم میں اندر آ جائیں گے تھینک یو شاہد اپریشیٹ اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ جو آپ نے ابھی کویشچنس کریں نا تو پلیز آپ اپنے کویشچنس ایسے رکھیں متصل رکھیں اور ان شاء اللہ وی بی مور دین ہیپی ٹو کنٹینیو ٹو گیو یو ایڈوائس کوئی لٹیگیشن کا ہے کوئی کرائم کا ہے اینی تھنگ ٹو ڈو ود بینیفٹس اور اینی ایشوز ریلیٹنگ ٹو deportation اور جو بھی ہوگی more than happy to take your calls emails is on and بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دے دیں اور مزید ڈسکشن کریں گے تھوڑے سے آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے تو نئے قانون میں آئی ہیں جو چینجز آئے ہیں رولز ریگولیشنز ابھی ایک بل پاس ہونے کی کوشش تھی اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے بیکاز جب آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں انٹریکٹیو پروگرام رہتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں نیو لا اور نیو ریگولیشن سے بھی تو چلیں بریک کے بعد ملتے ہیں اینڈ سی ان فیو مومنٹس